What's up guys and welcome to the video guys. I have this iPhone XR in my hands and let me show you the performance and the camera quality of this phone. So let me tell you the price of this phone first. The price is 74,500 rupees and this is 64 GB model. So guys, ये Apple का पहला ऐसा फ़ोन है जिसने डुअल सिम निकाला है. जो फर्स्ट सिम होती है वो आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं एंड सेकंड सिम आपको मिलेगी ई सिम यानी इलेक्ट्रॉनिक सिम जो आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी. वो मैंने अभी रजिस्टर नहीं करवाई. तो इसके बारे में कुछ बात करते हैं. सबसे पहले तो इसके 6 कलर्स आते हैं. ये मैंने लिया है 64 GB में और इसके ये रिकॉर्ड कर सकता है 12 मेगापिक्सल से और इसका अपर्चर होगा 1.8. जिन लोगों को अपर्चर नहीं पता क्या होता है, अपर्चर होता है जो नेचुरल लाइट आपके कैमरे में आती है. तो ये जितना कम हो आपका फ़ोन का कैमरा उतना बेहतर होता जाता है. जैसे कि मैं जिससे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका अपर्चर है 2.2. तो वो उसमें नेचुरल लाइट ज़्यादा नहीं आती, नेचुरल कलर्स इतने नहीं आते. तो और इसका फ्रंट कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 7 मेगापिक्सल तक और 60 HD 60 फ्रेम पर सेकंड से, जो कि मैंने आपको दिखा चुका हूँ मैं. और साथ ही साथ दोस्तों ये मैंने लिया है 64 GB में. ये 128 GB भी आप ले सकते हैं एंड इट हैज़ 4K 60 फ्रेम पर सेकंड ऑल्सो, जो कि बहुत कम फ़ोन में आई है. एंड बॉडी इज़ एल्यूमिनियम फ्रेम एंड LCD डिस्प्ले ऑल्सो. सो गाइज अब बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की. तो इसकी बैटरी है 2942 mAh की, जो मेरी बहुत बढ़िया चल जाती है. 1 दिन 2 दिन आराम से निकाल देती है अगर मैं ज़्यादा यूज़ ना करूँ. सो गाइज आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने iPhone 10 क्यों लिया, हालांकि दोनों का सेम प्राइस है और उसमें डुअल कैमरा भी है. गाइज मेरे को सबसे पहले तो इसका पोर्ट्रेट बहुत अच्छा लगा. मैंने जब नेट पे इसकी वीडियो देखी और उसमें आप लोगों को एमोलेड स्क्रीन मिल रही थी जिसका मेरे को इतना कुछ ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं था. और LCD डिस्प्ले के इसमें काफ़ी ज़्यादा नेचुरल कलर इसमें दिखाई देते हैं. और इसका बैटरी बैकअप भी मैंने उसमें देखा था, उससे ज़्यादा दिखा रहा था. एंड गाइस इसका वाइड एंगल कैमरा है जो आपको iPhone 10 में नहीं मिलेगा. और पोर्ट्रेट आपको मैं दिखाता हूँ इसका मैंने कैसा खींचा. साथ ही साथ इसमें आपको मिलेगी A12 की बायोनिक चिप. गाइस इफ़ यू विल टेक माय ओपिनियन, अगर इस बजट में आपका कोई 75-76 के आसपास कोई बजट है तो दिस इज़ द बेस्ट फ़ोन विच आई कैन रिकमेंड यू. एंड लेट मी शो यू द कैमरा क्वालिटी ऑफ दिस फ़ोन. This iPhone has IPS LCD capacitive touchscreen 16 colors. The size is 6.1 inches and it has scratch resistant glass which has true tone white color gamut and 120 Hz touch sensing. You will get iOS 12 which is upgradable to iOS 12.1.3 and it has Apple A12 Bionic chip with hexa-core processor, and also it has 12 megapixel camera with aperture 1.8 which is wide angle and LED dual tone flash, HDR photos, panorama, and also front portrait. And in selfie camera we will get 7 megapixel aperture 2.2 HDR and also 1080p 60 frame per second recording. It has stereo speakers which can give you 3D sound effects and also active noise cancellation with dedicated mic. So let me show you the camera quality of this phone. So guys, this is iPhone 10R front facing video camera. You can record HD 60 frame per second video with this. You can see the stabilization. We can record 60 frame per second with this. And let me show you the portrait of front camera. Guys, you can see it has portrait, front portrait. You can set the aperture also.
So guys, thanks for watching the video. If you like the video, please give the thumbs up and smash that subscribe button, and also hit the bell icon for getting daily notification and updates. So thank you very much and goodbye.